हेलो टीचर्स, ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी हमारे इस वीडियो से लाभ उठा सके, हमारे चैनल से लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे इस चैनल के नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे। आइए इस वीडियो में मैं आपको NIOS द्वारा जारी DLED ऐप्स में ले चलता हूं, जहां NIOS ने कुछ असाइनमेंट को अपलोड किया है। ये असाइनमेंट 500 कोर्स 501 के हैं। असाइनमेंट 1 यहाँ देखिए सैम्पल सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट 1 कोर्स 501 500 कोर्स 501 के असाइनमेंट को दिया गया है। इंग्लिश वर्जन में दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग DLED असाइनमेंट्स 2018। असाइनमेंट 1 कोर्स टाइटल देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया और सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। कोर्स कोड है DLED 501 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। आप इन सारे असाइनमेंट को एक सैंपल की तरह यूज कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को लिखने के लिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे असाइनमेंट को अपलोड किया है, उन सारे असाइनमेंट से भी आप लाभ उठा सकते हैं। आइए असाइनमेंट कोर्स 501 के असाइनमेंट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू वांट इन योरसेल्फ एज अ टीचर टू कैटर द नीड ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी एंड लर्नर, एक्सप्लेन विथ एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन दिया है। अ गुड टीचर इज वन हु नॉट ओनली टीचर्स हिज स्टूडेंट्स बट ऑल्सो हिमसेल्फ एवरीडे लाइफ। अ टीचर शुड बी द embodiment of knowledge. He should be intelligent, efficient and practical. He should have the knowledge of the child's interest and changing needs of the society. He should have the knowledge of child psychology and other subjects which may help him both in the development of the child and the society and of society. ये था इंट्रोडक्शन। अब आइए कॉन्सेप्ट में। Concept देखिए, as early as 1916 when John Dewey published his seminal work Democracy and Education, it was acknowledged that learners should become active participants in the educational process. These propositions, it clearly follows that in learning from their own experience, students become, in a sense, their own teachers. The change rule of the learner has in turn implications for that of the teachers. Instead of the source of knowledge, teachers become facilitator of the learning process. That is, their role is to create the set of conditions under which a student can best learn from their experience. Moreover, teachers can fulfill his role only by becoming learners themselves, and a primary source of their learning must be their student. Simply put, teachers who learn become better teachers, and learn who teach become better learner. Although this idea seems straightforward enough, educators have been very slow to put it into practice. However, the rapid technological changes of the last few decades may well provide the catalyst that finally bring about this needed reform in the field of education. Second chapter देखिए, as a teacher I would like to
effect the following changes in me. Firstly, I would like to develop in me the unique ability of reading my students' mind so that I can preempt something untoward and provide them learning environment. दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम्स बहुत बीत जाएंगे, इसलिए मैं पेज को अप एंड डाउन करके आपके सारे असाइनमेंट को बताते जा रहा हूँ. जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं हिंट्स दूंगा. एज ए टीचर आई वुड लाइक टू इफेक्ट द फॉलोइंग चेंजेस इन मी. एक टीचर होने के नाते मैं अपने में निम्नलिखित परिवर्तन को करना चाहता हूँ. ये देखिए, फर्स्ट दिया गया है. सेकंड देखिए, थर्ड पॉइंट में आइए. थर्ड में आने के बाद देखिए फोर्थ पॉइंट. फोर्थ के बाद फिफ्थ भी पॉइंट आया है. और सिक्स्थ भी पॉइंट आया हुआ है. सेवेंथ पॉइंट को भी देखिए. और लास्ट पैराग्राफ में आइए. ये रहा टीचर्स का इफेक्ट में. देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ इनोवेशंस वेयर द ट्रेडिशनल रोल ऑफ द टीचर हैज चेंज्ड इंक्लूड the emergence of student voice in planning, implementation and assessment cycles, reverse monitoring, for example student as tutor in programs such as the Tech Angels, increasing use by school of student assistant in learning through their own leadership and contributions, enabling multiple source of knowledge for learners, including use of MLES and social networking, which includes access to expertise outside the classroom. कंक्लूजन में आइए. कंक्लूजन आने के बाद देखिए रेफरेंसेस दिया रहा है. एज ए कंक्लूजन देखिए, एज ए टीचर द लर्निंग प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप एंड टीचर्स लाइक स्टूडेंट्स शुड आल्सो कीप लर्निंग new things so that they can teach their students something new every day. References में आइए. Changing role of teachers in the present society, Stunavar by Swelea Sindhi. ये रेफरेंसेस आपका बुक्स हैं. आप इससे भी, इन सब बुक से भी आप अपने फर्स्ट असाइनमेंट को लिख सकते हैं. 2 number देखिए क्वेश्चन. हाउ डू यू फील दैट रोल ऑफ एंसेंट गुरु हैज चेंज इन प्रेजेंट सोसाइटी? विच क्वालिटीज ऑफ एंसेंट गुरु you would like to adopt as a teacher and why? Introduction देखिए. Guru refers to one who dispel the darkness of ignorance or the teachers. Kula refers the family and clan. Gurukul is an ancient Indian concept of education wherein the people learn by residing with the teacher as a part of his family. ये रहा इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट में आइए. कॉन्सेप्ट देखिए. इन एंशिएंट टाइम द गुरुज यूज्ड टू होल्ड अ वेरी हाई पोजीशन इन सोसाइटी. आज के वातावरण से उस समय के वातावरण में बहुत अंतर है गुरु को पोजीशन में. कॉन्सेप्ट में देखिए 1 पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ देखिए. थर्ड पैराग्राफ में देखिए, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट गुरु एंड टुडे गुरु. मैंने पहले ही कहा था, द एंशिएंट पीपल बिलीव इन देयर गुरु एंड चिल्ड्रन आइडलाइज देम. The Guru was not only give the knowledge about science or information, but he also imparted the value education's lessons to them. They can care for them, so help them developing
a good personality, while nowadays the teachers only concentrate on the scientific knowledge and the imparting the knowledge about the respective subject and don't pay attention towards value education. Next paragraph देखिए, being a teacher I would like to teach my students the best of way of learning as well as the value education and moral lessons, just as the ancient teachers do, because it's the duty of a teacher to teach a student in every aspect. After all, they have to contribute for the society. Quality of his guru. Quality of ancient guru. The following quality of ancient guru are as follows. पॉइंट्स देखिए 1 पॉइंट्स, एक एंसेंट गुरु की क्वालिटीज़ क्या क्या है, इन सब को पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स करके दिखाया गया है. 1 नंबर पॉइंट्स में देखिए, 2 नंबर पॉइंट्स देखिए एंड 3rd नंबर पॉइंट्स भी देखिए. 3rd नंबर पॉइंट्स देखिए, गुरुज हैड पावर्स टू कमांड देयर स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन. They could judge the situations well and were able to give good advices to king or people. कंक्लूजन में आइए, कंक्लूजन देखिए. कंक्लूजन में लास्ट चैप्टर देखिए, लास्ट लाइन में इन एंसेंट the students are stay in guru's home and they study there and do works for guru. The student respects the teacher, but nowadays they are not such some activities. References देख चुके हैं आप लोग. 3rd number क्वेश्चन देखिए, survey some schools in your locality and enlist the major issues of the elementary education. Suggest the way to resolve these issues. इंट्रोडक्शन में आइए. इंट्रोडक्शन देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन of elementary education or UEE means that all children who falls in the age group of 6 to 14 should necessarily receive universal free and compulsory free educations. The Constitution of India stresses the universalization of education in India according to the Articles 45, which reads as under: the state shall endure to provide universal free and compulsory elementary education to the children of age group 6 to 14 within 10 years from the commencement of this constitution. ये रहा इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट में आइए. कॉन्सेप्ट देख लीजिए. इसके बाद देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज पार्ट टाइम एजुकेशन. फर्स्ट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स के. फाइनेंस देखिए, for that following measures should be taken. The problem उसके ऊपर देखिए, the problems of girls not getting the education is the biggest problem and needs to be tackled. For that following measures should be taken. Point देखिए, appointing ladies educators, popularizing blended primary schools. पॉइंट्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पॉइंट दिए गए. यूनिवर्सलाइजेशन हैज गॉट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. यहाँ एस्पेक्ट्स दिया गया है: यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स और इनरोलमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन. कंक्लूजन में आइए. कंक्लूजन देखिए, इन सारे क्लोजर को नोट करके देखिए, पॉइंट मिलाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विजिट सम स्कूल्स इन योर लोकेलिटी एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडाप्टेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ NCF 2005. इंट्रोडक्शन देखिए, NCF 2005 seeks to provide a framework in which teachers and schools can choose
and plan experiences that they think children should have in order to realize educational objectives. The curriculum should be conceptualized as a structure that articulates required experiences. Media and educational technologies are significant, but teachers remain central. इंट्रोडक्शन देखिए, कॉन्सेप्ट में आइए. आई हैव विजिटेड XYZ स्कूल इन माई प्लेस. इस जगह में एक XY स्कूल नहीं लिखना है, आपको कुछ इस विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप विजिट किए थे. इट इज़ अ स्टेट बोर्ड सिलेबस स्कूल. The most attractive things I noticed about the school was they have inclusive learning. आपको कुछ 3-4 विद्यालयों का दौरा करना है, विजिट करना है, उसके बारे में लिखना है. कॉन्सेप्ट देखिए, सेकंड छोटे से पैराग्राफ है. थर्ड में देखिए, फोर्थ लाइन में देखिए, दे ऑल्सो हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर योगा एंड मेडिटेशन. ऑल दिस हैव सेपरेट टाइम टेबल. देयर फर्स्ट लैंग्वेज एज द रीजनल लैंग्वेज, दैट इज अपना लैंग्वेज दिया गया जो जहाँ जिस तरह के इसमें बनाए गए हैं. पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं. सारे पॉइंट्स को एक आप देख सकते हैं और इसी का फॉलो कर सकते हैं. कंक्लूजन में देखिए, NCF 2005 हाईलाइट्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. 1 नंबर देखिए, 2 नंबर भी देखिए, 3 नंबर में तो है नहीं. लास्ट में देखिए, कंक्लूजन का लास्ट लाइन दिया गया, द नीड टू मूव अवे फ्रॉम हार्वर्ड लेसन प्लान to prepare plans and activities that challenge children to think and try out what they are learning. And family. तो इस प्रकार आप कोर्स 501 के असाइनमेंट 1 के मॉडल सैंपल्स को आप देख सकते हैं और उसी के अनुसार आप अपने असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए. अपने मित्र को भी इस वीडियो को और हमारे चैनल के बारे में शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो और चैनल से लाभ उठा सके. ये रहे इंग्लिश वर्जन में. बहुत से कमेंट्स आते हैं इंग्लिश वर्जन में अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने भी बहुत सारे अधिकांश वीडियो इंग्लिश वर्जन में अपलोड किए हैं और ये भी इंग्लिश वर्जन में ही है. NIOS द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट, जिसे एक आप सिंपल ये मॉडल असाइनमेंट के रूप में आप ले सकते हैं और अपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं. फिर से मैं कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए.